Hello students, how are you? We are here for the class 9 chapter number 2, the sound of music. In the previous class, I gave you the work of the first chapter, the fun they had. I hope all of you might have done the question answers. Please maintain a separate notebook of English. Write all the question answers that you can. When we will meet together in the school, then we will try to do the questions there lively so that we can do them very well. Right, students? So today we are going to start with the second chapter, the sound of music. Right? I hope all of you are ready with your book, notebook, pen, pencil so that you can prepare the notes. And how we can move ahead with the chapter, as you know, we have to follow the same technique of doing the chapter, that is writing the heading for every paragraph. As I told you that if we have the summary of the chapter with us in main points, or if we have the gist of the chapter, gist means like a short content of the chapter, we can understand it very easily and in a better way. Moreover, the headings, like you see here, I have already divided the chapter in main headings. Like there are 10 headings of 10 different paragraphs. So these are questions also. Understanding students? These 10 headings can serve as question answers. I will tell you after the story ends. May I start with the chapter? Well, I hope all of you are ready. Starting with the beginning, we find there is a main character in the story, Evelyn Glennie. Evelyn Glennie, who we find is handicapped. Handicap can be any impairment of hearing. It can be being blind, or it can be not being able to walk right because of any disability. So handicap can be any disability, any impairment that a person suffers from. We find in this chapter there is a young girl, Evelyn Glennie. Though she was not handicapped by birth, but very soon as she gets into teenage, she suffers from hearing impairment. Despite that, she fights with a lot of obstacles, problems. एक main character है Evelyn Glennie. She cannot hear. She cannot hear. She is deaf. She cannot hear. फिर भी वो बहुत सारी obstacles, hindrance मतलब रुकावटें और प्रॉब्लम से फाइट करती है. और जब हम फाइट करते हैं अपनी फुल कैपेसिटी के साथ, अपने पूरे एफर्ट्स लगाते हैं, तो क्या होता है? विक्ट्री इज आवर्स. हम जरूर विक्ट्री पाते हैं उस फील्ड में. ऐसी ही एक बहुत इंस्पायरिंग मोटिवेशनल स्टोरी आज हम पढ़ेंगे एवलिन ग्लेनी की. राइट? फर्स्ट पैराग्राफ, लाइन बाय लाइन मैं रीड नहीं करूंगी चैप्टर को. आपको मैंने बोला था ना, एक मैजिक होता है प्री रीड करने से. सो जब भी आप मेरी क्लास में आएंगे तो एक चैप्टर पहले से ही पढ़ के आएंगे. आज हम सेकंड चैप्टर कर रहे हैं जैसे, तो नेक्स्ट क्लास में हम थर्ड चैप्टर करेंगे, तो आप पहले से ही थर्ड चैप्टर करके आएंगे. आप फोर्थ चैप्टर भी चाहे पहले ही पढ़ लो. प्री रीडिंग करके रखो. Underline all the difficult words. Word meanings के लिए you all have dictionary with you. So I hope you all will write the meanings in the book before. Underline the difficult words और heading लिखने के लिए आप ready रहेंगे. I would like to proceed ahead with the chapter. Same style से. First paragraph deals with the introduction only. We are given introduction of Evelyn Glennie. Who she is. She is just a girl, a slight girl who looks younger than 17 years as introduced in the story. And that girl goes for giving her you can say a shot, or she has to go to face a biggest challenge that she has to there
in the Academy of Music in London, in the Royal Academy of Music in London. She goes and she has to face the biggest challenge, that is, she has to give her solo performance, and that she does very well. We find further in the second paragraph. This is loss of hearing. In loss of hearing means, as I told you, she was deaf. She cannot hear. So we find that she was quite young and she could not listen. She could not hear very well. It was her mother who noticed that she had started overhearing, or she had started not to hear very carefully. So this paragraph is divided again in two parts. That is, when she was 8 years old, when she was 8 years old, and when she was 11 years old. When she was 8 years old, her mother noticed that she cannot listen. When she was 11 years old, by that time, in school, principal, teachers, they also had noticed that she cannot hear very well. And so that suddenly what happened? Everything looked black to Evelyn. Everything was black means she found that there was something that blocked, that restricted her learning, her hearing, lot of problems that one can face. जब कोई सुन नहीं सकता तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके लिए बोला है everything was black, means she lost her hope. She found that things were very dull and dismal around. Coming to the next paragraph. In this paragraph, you have to write the heading Ron Forbes. Apostrophe means of. Observation. How we will read? Observation of Ron Forbes. There was a percussionist, the master, trainer, जो उसको training देता था, how to play that percussion, that kind of instrument that she played. She could play effortlessly on that percussion. So what we find, she had a lot of interest in music. Ron Forbes, a percussionist, noticed that she had the potential. Potential means उसके अंदर एक talent था, inner talent उसके अंदर था, जो किसने explore किया, identify किया, फिर explore किया, किसने किया? That was Ron Forbes. जैसे एक बच्चे में अगर म्यूजिक का बहुत अच्छा टैलेंट है, तो सबसे पहले उस टैलेंट को कौन पहचान सकेगा? म्यूजिक की टीचर. इसी तरह रॉन फॉर्ब्स एक म्यूजिक टीचर था, यू कैन अंडरस्टैंड, और उसने टैलेंट को, एवलिन ग्लैनी के टैलेंट को पहचाना. एंड देन रॉन फॉर्ब्स knew that Evelyn Glennie तो cannot hear. अब म्यूजिक के लिए तो you need feelings, expressions, you have to hear, you have to play the instrument also. तो फिर रॉन फॉर्ब्स, बिकॉज वो टीचर था, ट्रेनर था, मास्टर था, मास्टर को पता होता है एक बच्चे में से बेस्ट टैलेंट कैसे निकालना है. रॉन फॉर्ब्स ने एवलिन ग्लेनी को कहा कि जैसे ड्रम्स हैं, she used to play, she has to play the drum. So ड्रम का जो higher drum है, that you have to feel the vibrations from the upper body, and the lower drum you have to feel the vibrations from the lower body, like that. So she could understand, or she could feel the vibrations of the higher drum from the waist up and the lower drum from the waist down, and she had learned to open her mind and body to sounds and vibrations. So उससे क्या हुआ? धीरे धीरे उसने feelings start, vibrations start कर दी, feel करना. So it was very easy for her now to play the musical instruments. Then what happened? Next paragraph, progress made. Progress कैसे? जैसे अब first term के बाद students धीरे धीरे improve करना शुरू कर देते हैं ना. So that is what? प्रोग्रेस करना शुरू कर देते हैं वो अपने सब्जेक्ट में, और फिर वो एक पीक पे पहुंच जाते हैं, और एक उनमें थोड़ा सा
you can say that एक ये refine हो जाते हैं, they become more refined, they start showing the best of their efforts. Like that, she started making the progress. When she started making the progress, at that time, what was her age? She was 16 years old. She was just in her teenage and she has been performing amazingly, wonderfully. So what happened? She decided to make, अब वो इतनी perfect हो गई थी और उसको guidance भी बहुत अच्छी मिल रही थी और उसका talent was to the forefront now. So she had decided to make music her life. And she gave her audition for Royal Academy of Music and she scored highest marks in that field. Moreover, she also started giving solo performance. Solo means single. Jaise dual means dual, two. Solo means single performance she had started giving. Now, you know that she is deaf and she started giving solo performances also. So she had reached some level, some status she had achieved. So what we find after that, the people had started getting a lot of inspiration from her, and then she gives a very inspiring message. An inspiring message. Inspiring means जो हमको motivation देता है, हमारे को कुछ अच्छा करने के लिए आगे बढ़ाता है, प्रेरणा देता है, you can say like that. एक इंस्पायरिंग मैसेज उसने लोगों को क्या दिया. क्या 5th पैराग्राफ में अंडरलाइन दैट. आई थिंक साइड बाय साइड आप अपने आप ही अंडरलाइन करेंगे. डिफिकल्ट वर्ड्स तो करे हैं, सेंटेंसेस भी कर लो विच आर रियली phenomenal, which are really strong sentences which we need to remember. She says that if you work hard and you know where you are going, you will get there. Means आप सबको अपना एक एम, एक टारगेट सेट करना है और अपने स्मॉल ऑब्जेक्टिव्स के साथ उनकी हेल्प से उस एम तक पहुंचना है. So what we find that next paragraph, she had been so intellectual, so diligent, means वो इतनी इंटेलिजेंट थी, इतनी टैलेंटेड थी कि उसने फ्रेंच और जापानीज लैंग्वेज भी लर्न करी. एंड शी सेज दैट शी कुड अंडरस्टैंड. ये लैंग्वेजेस उसने कैसे अंडरस्टैंड कर ली? बिकॉज 11 ईयर्स की थी ना जब उसकी डेफनेस आइडेंटिफाई हुआ था. क्योंकि 11 ईयर्स तक एवलिन ग्लेनी लैंग्वेजेस को और स्पोकन वर्ड्स को समझ सकती थी, इसलिए उसके अंदर एक लर्निंग एबिलिटी तो पहले से थी. वो तो डेफ तो बाद में हुई, इसलिए उस लर्निंग एबिलिटी के बिहाफ पर व्हाट शी कुड डू, शी कुड लर्न मोर लैंग्वेजेस, जैसे फ्रेंच and Japanese language also she learned. And she says that my speech is clear. She could speak well because she could hear till she was 11 years old, and that's why she was able to learn more languages. Coming to the next paragraph, 7th paragraph, feels music. I told you earlier also music कैसे feel करती थी वो? अपनी बॉडी से वाइब्रेशंस. जैसे अगर अभी मैं ग्राउंड फ्लोर पे मेरा घर है, अगर बाहर रोड पे एक मॉन्स्ट्रस व्हीकल, मींस जैसे सपोज ट्रक हो गया, बस हो गया, अगर वो रोड पे जाएंगे ना तो मेरी जो ग्राउंड फ्लोर है यहाँ पे भी मैं वाइब्रेशंस फील कर सकती हूँ. कितना दूर होता है कोई भी व्हीकल, हैवी व्हीकल, और उसकी वाइब्रेशंस ट्रेवल होती हैं. ऐसे ही अगर आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं तो ट्रेन वहां से जाती है तो उसकी वाइब्रेशन भी हम फील करते हैं. लाइक दैट जब वो ड्रम्स को बीट करती है तो उसकी वाइब्रेशंस वो अपनी बॉडी में फील करती है. दैट्स व्हाई शी कुड फील म्यूजिक. शी कुड फील म्यूजिक और शी फील्स म्यूजिक. व्हाट वी फाइंड, शी फील्स म्यूजिक in 6 different parts of her body. उन सारे 6 different parts of the body को पैराग्राफ नंबर 7 में encircle करो. Where she feels? She feels in the skin, in the cheekbones. Cheekbone ये होता है. She feels in the hair, in the fingertips, in the bare feet,
and in the legs. This is what she says. So, एक गर्ल जो डेफ है सुन नहीं सकती, बट लोग उसके म्यूजिक को सुन सकते हैं. So it is very amazing, very astounding, very astonishing, मतलब सरप्राइजिंग. ये बहुत हैरान कर देने वाली बात है. किसके लिए? ऑडियंसेस के लिए, जिसके लिए वो परफॉर्म करती थी. So 1991 में उसको अवार्ड मिला सोलोइस्ट ऑफ द ईयर. जैसे बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड होता है, ऐसे सोलोइस्ट मीन्स सिंगल पर बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाली गर्ल, उसको अवार्ड मिला. और शी गॉट वन कॉम्प्लीमेंट ऑल्सो बाय वन परक्यूशनिस्ट जैसे उसका मास्टर ट्रेनर. उसने उसको एक कॉम्प्लीमेंट दिया दैट गॉड may have taken her hearing, but God has given her back something extraordinary. When I was young, children, जब मैं छोटी थी ना, तो मुझे याद है हम ट्रेन से ज़्यादा ट्रेवल करते थे. अभी भी करती हूँ मैं मेट्रो ट्रेन से, बट पहले हम ट्रेन से ट्रेवल करते थे. तो ट्रेन में कुछ बेगर्स चढ़ जाते थे. They were blind. And I used to be very surprised. बहुत हैरान होती थी ये देख के कि वो ब्लाइंड है बट हारमोनियम को प्ले कर रहे हैं. अब वो देख तो नहीं पा रहे उस हारमोनियम को, फिर भी वो प्ले कर पा रहे हैं. कैसे? जब गॉड एक एबिलिटी ले लेता है हमारा, एक सेंस हमारा, ये हमारे जो 5 सेंसेस होते हैं उसमें से अगर एक सेंस बिल्कुल वर्क नहीं करता तो उसकी सारी एनर्जी, सारी पावर जो है वो किसी और टैलेंट में आ जाती है, किसी और सेंस में वो यूज हो जाती है. इसी तरह से शी कुड नॉट हियर बट शी हैड द ग्रेट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, परसीव म्यूजिक. कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, 9th paragraph. Evelyn says that she was a workaholic. Workaholic. There's a suffix in this holic. Holic means एडिक्टेड, किसी चीज का यूज्ड टू हो जाना, आदी हो जाना, मतलब यूज्ड टू हो जाना. तो शी वॉज वर्कोहोलिक. वर्कोहोलिक मीन्स उसको बहुत ज्यादा काम करने की हैबिट थी. जब हमारे को कोई अच्छी हैबिट होती है और वो अच्छी हैबिट वो भी काम करने की, तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव जरूर आता है. दैट्स वाई शी ऑल्सो गॉट अ लॉट ऑफ नेम एंड फेम. शी सेज दैट शी वॉज वर्कोहोलिक. अपार्ट फ्रॉम द, अब वर्कोहोलिक थी तो वो क्या करती थी? अपने कॉन्सर्ट्स मीन्स अपने म्यूजिकल कॉम्पोजिशंस तो वो प्रेजेंट करती थी. उसके अलावा व्हाट शी डिड, शी यूज्ड टू गो टू द प्रिजन्स एंड ऑल्सो इन हॉस्पिटल्स. वो प्रिजन्स में और हॉस्पिटल्स में भी कॉन्सर्ट करती थी. एंड देयर शी यूज्ड टू मोटिवेट द पीपल. शी वॉज अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर द डेफ children, and they see that there is nowhere that they can not go. मतलब हम हर जगह पहुंच सकते हैं जहां पर भी हम efforts करें. Untiring हमारा efforts होना चाहिए for that. Coming to the next, places and causes to perform हमारा हो गया. Places which she used to go, that is prison and hospital. And causes to perform. Why? Causes means reason. वो क्यों perform करती थी? It was to motivate the deaf children and the young children. Apart from that, coming to the next, inspiration. She was a great inspiration for a lot of people and also the children of her age. She brought percussion to the front of the orchestra, and she has also given inspiration to those people who are handicapped, to handicapped people. एक डेफ पर्सन जो कर रहा है उससे सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन किसको मिलेगा? एक कॉमन मैन को नहीं, एक डेफ मैन को, राइट? एक डेफ पर्सन को. एंड व्हाट शी सेड, दैट इफ शी कैन डू देन एवरीवन कैन डू, राइट? शी यूज्ड टू से टू द चिल्ड्रन ऑफ हर एज और ऑफ हर काइंड कि अगर मैं कर सकती हूँ so why not you? Everyone can do. And she has given enormous means huge, very big pleasure to millions of people.
right? With this, the chapter ends, and we here just get a great message that we face a lot of challenges in life. But if we keep our aspirations high, then we can overcome all the hindrances in life. Hindrances means हम अपनी life की सब problems को overcome कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं. आपको भी इसी determination के साथ इंग्लिश पढ़नी है, चैप्टर करना है. ये नहीं सोचना दैट मुझे नहीं समझ आता या मुश्किल है, कोई थॉट लाना ही नहीं. यू हैव टू ओनली थिंक दैट आई विल ट्राई बट नेवर क्राई. अब इस चैप्टर के 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट पैराग्राफ में है. ओके, चैप्टर के एकदम एंड में दे रखे हैं ना, ओनली 5 क्वेश्चंस. सेकेंड क्वेश्चन का आंसर सेकेंड पैराग्राफ में. थर्ड क्वेश्चन का आंसर इज इन थर्ड पैराग्राफ. फोर्थ क्वेश्चन जो है उसका आंसर इज गिवन इन 9th पैराग्राफ. And the answer of the last question, how does Evelyn hear music? Music वो कैसे सुनती है? That is given in 3rd paragraph. Questions are very simple. I hope all of you will be able to do the answers. Okay? Till I start the next chapter, I hope all of you will be prepared with the reading. आप 2 chapters की reading पहले ही करके रखेंगे because we have a gap of 2-3 days in between. So I hope you will definitely do. Right? Wish you all the best. I hope all of you are taking your precautions very well. You maintain social distancing too, and you are washing your hands also very frequently so that we can prevent the attack of any virus. Thank you, students.